तो आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के MCQs पढ़ते हैं आज। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? ऑप्शन ए एक्सेसिव इनकम, ऑप्शन बी अल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी अनलिमिटेड वांट, ऑप्शन डी लिमिटेड स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज. द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए excessive income. The next question is principal characteristics of resources are option A, they are scarce in relation to our needs. Option second is they have alternative usage. Option 3 is both A and B, and option 4 is none of this. The correct answer of the question is option both A and B third. Question 3, in which of the following situation does scarcity arises? Option 1, supply of resources, demand for resources, supply of resources, demand for resources, supply of resources equal to demand for resources. Option 4, none of these. The correct answer of the question is supply of resources less than demand of resources. Uh, the next question is economic problem arise due to the fact first resources are scarce, second human wants are unlimited, third is resources have alternative uses, fourth is all of this. The correct answer of the question is fourth all of this. Question 5, the resources for satisfying human wants are option 1 limited, option 2 unlimited, option 3 available at zero prices, option 4 none of these. The correct answer of the question is answer 2 unlimited. The sixth question is scarcity of resources exists first at the micro level, at the macro level, micro as well macro level. Fourth is none of this. The answer of the question is option 3 micro as well macro level. Question 7, positive economics involves statements which are option 1 verifiable, not verifiable, option 3 may or not be verifiable, option 4 none of this. The correct answer of the question is option A verifiable. The next question is a statement which does not offer any suggestion is known as option first positive statement, option second normative statement, option third both A and B, option fourth is none of this. The correct answer of the question is option 1 positive statement. Next question, normative economics deal with facts, opinion, both A and B, D none of this. The correct answer of the question is opinion. The next question is which of the following is the example of economic activity? First production, second consumption, third exchange, fourth all of this. The answer is all of this, fourth option. Question 11. Who controls economic activity under certainly planned economies? First, industrialist, second, private firms, third, government, fourth, consumer. The correct answer of the question is government. The next question is the government does not interfere in the process of decision making under first market economy, second centrally planned economy, third is mixed economy, fourth is all of this. The answer of the question is option first market economy. Consumer is sovereign under 1. Controlled economy, option 2. Free economic, option 3. Mixed economy, option 4. Both A and B. The correct answer of the question is both A and B. The next question is economic problem arise due to first limited want, second has scarce means, third is alternative uses, fourth is both B and C. The answer of the question is both B and C. Slope of production possibility curve is first a straight line, convex to the point of origin, convex to the point, concave to the point of origin. D none of these. The correct answer of the question is concave to the point of origin. The next question is the problem of what to produce relate to first the choice of technique, second distribution of income, third is market value of the goods and services,
fourth is the choice of goods and services. The answer of the question is the choice of goods and services, जो कि है हमारा फोर्थ ऑप्शन. अगला क्वेश्चन, which of the following is related to the problem how to produce? Factorial distribution of income, the choice of technique, the choice of production, D none of these. सही आंसर है choice of technique. The next question is, when an economic is operating on the PPC, it indicates option first, potential output is greater than actual output, potential output is equals to actual output, potential output is less than actual output. The fourth option is none of this. जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थ्री, पोटेंशियल आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, जो कि सेकंड ऑप्शन. Question 19. Increase growth of resources implies that production possibility curve shifts to the right, shifts to the left, rotates to the right. Option 4. None of these. और सही आंसर है shift to the right. हमारा अगला क्वेश्चन है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg of rice produced on a land which can also produce 80 tons of wheat is first 100 kg of wheat, second 80 tons of wheat, third is 8000 tons of wheat, fourth is none of this. The answer of the question is option second, 80 tons of wheat. Concavity of PPC implies increasing slope, decreasing slope, constant slope. None of these. सही आंसर है increasing slope. The next question is, the shape of transformation curve is changed by option A opportunity cost, option second is total cost, option third is marginal opportunity cost, option fourth is none of this. The answer of the question is marginal opportunity cost. Question 23. Ordinal concept of utility express utility in term of option 1 units, option 2 level of satisfaction, option 3 constants, option 4 none of this. The correct answer of the question is level of satisfaction. The next question is, one satisfying power of a commodity is called option first consumption, option second utility, option third production, option fourth is value addition. देखो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं क्यों, क्योंकि वो हमें कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, और यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में. ठीक है, तो यूटिल्स क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर. व्हाई डू वी नीड टू बाय एनी गुड और सर्विस? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस some sort of satisfaction, and that satisfaction is known as utility. So option number 2. अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने बच्चों ने बताया, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इंक्रीजिंग स्लोप है ना. देखो ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात चल रहा है यार. यहाँ पेन से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, हाथ से लिख करके नहीं. तो अगर देखोगे जैसे, तो गौर से देखो ग्राफ को तो समझ में आएगा. अभी देखो ये जो गैप है यहाँ, ये एरो से मैं दिखा रहा हूं, इतना y को कम किए तो x इतना बढ़ा. फिर देखो फिर y को तुम यहाँ पे कम कर रहे हो. ये अभी छोटा लकीर खींच रहा हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, दिखेगा अच्छे से. ग्रीन कलर कर लिया है ना, ये देखो बढ़ा. तो क्या होता है, जैसे जैसे मतलब इंडिफरेंस करते तुमको क्या करना है, सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट रखना है. लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओगे या जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, एक ज्यादा छोड़ करके दूसरा कम बढ़ेगा. ऐसे समझो बात को. ठीक है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के केस में भी समझो. ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व के भी केस में समझो. पहले इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में समझो कि हम ये मान लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के सारे रिसोर्स को यूज करके
जो गुड्स एंड सर्विस बन रहा है ना। तो ये पीपीसी हुआ तुम्हारा अभी जो मैंने बनाया। तो जो खेत गेहूं उगाने के लिए ज्यादा सुटेबल है, वहां पे गन की फैक्ट्री खोल रहे हो और उस किसान को बोल रहे हो कि अब तुम गन बनाओ। ठीक है, क्या है, वॉर एंड पीस दो कंसेप्ट है। नॉर्मल सिचुएशन है तो आदमी गेहूं पे ज्यादा फोकस करेगा, गन पे कम फोकस करेगा। लेकिन अगर वॉर आ गया तो क्या होगा, गन पे ज्यादा फोकस करेगा, गेहूं पे कम फोकस करेगा। अब एक चीज ध्यान देने का काम है कि क्या हर वो व्यक्ति जो गन की फैक्ट्री में काम कर रहा था, क्या वो गेहूं उगाने के लिए भी उतना ही अच्छा है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं। क्या हर वो व्यक्ति जो गेहूं के खेत में काम कर रहा था, क्या वो गन बनाने के लिए भी उतना ही इफिशिएंट है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं। तो क्या होगा, एक को सेक्रीफाइस करेंगे, किसी एक चीज को सेक्रीफाइस करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, है ना। तुमको टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो कांस्टेंट रखना है, या तुमको टोटल आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो एक तुम यहाँ पे देखो कम कर रहे हो, ये चीज तुमने कम किया, तो दूसरा ये बढ़ा, है ना। लेकिन जैसे जैसे कर्व पे शिफ्ट करते जाओगे तो क्या होगा, किसी एक को तुमको ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से दूसरे में बहुत थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब ही होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो उसमें क्या होता है कि नॉट ऑल रिसोर्सेस आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो एक आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उस ज्यादा सेक्रीफाइस की वजह से दूसरे में छोटी वृद्धि होगी। और इसीलिए इसीलिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इसका शेप जो है वो किसी सेठ जी के फूले हुए पेट की तरह है। और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो किसी के पिचके हुए गाल की तरह है। यहाँ पर कोई सेठ जी इसको ऑफेंस ना माने और कोई जो दुबला पतला व्यक्ति है इसको ऑफेंस ना माने। ये मेरा डिस्क्लेमर है। When only one unit of the commodity is consumed. Option 1, mu equal to tu. Option 2, mu is greater than tu. Option 3, tu is greater than mu. Option 4, none of these. The correct answer of the question is option A, mu equal to u. The next question is when marginal utility is negative, total utility is option first 0, second is diminishing, third is maximum, fourth is minimum. The answer of the question is diminishing. Next question. When total utility is maximum, marginal utility becomes option 1 0, option 2 unity, option 3 positive, option 4 negative. The correct answer is 0. The next question is when total utility is increasing at a diminishing rate, marginal utility must be first increasing, second decreasing, third is constant, fourth is negative. The answer is second decreasing. Question 29. Marginalized utility of a particular commodity at a point of saturation is option 1 0, option 2 unity, option 3 greater than unity, option 4 greater than less than unity. The correct answer is 0. तो दूसरा क्वेश्चन है इन केस ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व शोज ऑप्शन ए नेगेटिव स्लोप, ऑप्शन बी पॉजिटिव स्लोप, ऑप्शन थर्ड इज जीरो स्लोप, ऑप्शन फोर्थ इज नन ऑफ दिस. तो द आंसर इज अ नेगेटिव स्लोप विच इज ऑप्शन फर्स्ट. अगला question. Law of demand must fail in case of first normal goods, option 2 given goods, option 3 inferior goods, option 4 none of this. The correct answer of the question is answer 2 given goods. So हमारा अगला क्वेश्चन है inferior goods are those which is income effect is
First negative, second positive, third zero, and fourth is none of this. The answer of the question is first negative. Question 33. Which of the following pair represents substitute goods? Option 1. Car and petrol. Option 2. Juice and cold drink. Option 3. Bread and butter. Option 4. All of this. The correct answer of the question is juice and cold drink, which is option 2. तो अगला जो क्वेश्चन है वो है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय फर्स्ट मनी, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, थर्ड है वेट ऑफ गुड, फोर्थ है नन ऑफ दिस. जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट मनी. Demand curve is upward sloping. Option 1. Normal goods. Option 2. Inferior goods. Option 3. Giffen goods. Option 4. None of this. तो सही आंसर है आंसर 3. Giffen goods. जो अगला क्वेश्चन है वो है इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू पहला डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड, सेकंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस. जो आंसर होगा वो है हमारा ऑल ऑफ दिस. Next question है assumption of the law of demand refers to first constant on price of the commodity. Question option 2 determinants of demand other than on price of the commodity. Option 3 constant cost of production. Option 4 none of this. The correct answer of the question is determinants of demand other than on price of the commodity. The next question is in case of Griffin paradox, the slope of demand curve is option first negative, option second positive, option third is parallel to x axis, option fourth is parallel to y axis. जो हमारा आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव. अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड व्हेन. पहला है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव. ऑप्शन 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव. ऑप्शन 3 नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. ऑप्शन 4 नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू increase in real income of the consumer, second is decrease in real income of the consumer, third is increase in purchasing power of the consumer, and the fourth is both A and C. The answer is both A and C. Next question is in case of contraction of demand we move on. Option 1 from lower point to upper point of the same demand curve. Option 2 to right on the other demand curve. Option 3 from upper point to lower point on the same demand curve. Option 4 to left on the another demand curve. The correct answer is option C from upper point to lower point on the same demand curve. Sorry, the answer is from lower point to upper point on the same demand curve. Bol. The next question is a fall in income of the consumer in case of normal goods will cause first option is upward movement on the demand curve, second is downward movement on the demand curve, third is rightward shift of the demand curve, fourth is leftward shift of the demand curve. The answer of the question is leftward shift of the demand curve. Question 43. An increase in the price of electricity will cause the demand for electric appliances to rise, fall, remain the same. None of this. The correct answer is fall. तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन. पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दिस. तो हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच इज ऑप्शन फर्स्ट. अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वांटिटी टू परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड डिमांड. क्वांटिटी डिमांड मूवमेंट अलोंग द डिमांड shift in demand curve. The correct answer is quantity demand. जो अगला क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 180
then marginality is first 50, second 1.2, third 30, fourth 0.8.33. The answer is 30 क्योंकि 150 से 180 हो जा रहा है तो 30 का इंक्रीज हो रहा है. Question 47. In which analysis can utility be measured in definite numbers such as 1, 2, 3, 4, etc.? Cardinal utility analysis, ordinal utility analysis, option 3, both A and B, option 4, none of these. The correct answer is cardinal utility analysis. The next question is law of diminishing of marginal utility states that when more and more units of a commodity are consumed, marginal utility first begins to increase, second remains constant, third begins to decrease, fourth becomes zero. The answer is begin to decrease. Question 49. Given the fact that MRS between goods X and Y is diminishing, IC is option 1, convex to the origin, concave to the origin, straight line, none of this. The correct answer is convex to the origin. The next question and the last question is given the money income and the third thrift price, the line which shows all different combinations of two goods that a consumer can buy by spending all this income is called first है production line, second है budget line, third है ICO cost line, fourth है none of this. जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है बजट लाइन. बजट लाइन कुछ ऐसी दिखती है. सिंपल बात है. न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है? ए. किसमें ऐड किए? इस पे हम अपनी गुड्स की कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं. थैंक यू.